हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाप्लास इक्वेशन कर लिया था। उसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, मतलब चार्ज प्रॉब्लम ऑन कंडक्टिंग प्लेन वीडियो था हम लोग का। उसके पहले हम लोगों ने किया था डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन ए लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, उसमें ये इमेज मेथड पे क्वेश्चन आएगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी एग्जाम होता है उन सभी जगह आप देखोगे एक क्वेश्चन इमेज मेथड पे आता है। सो वी आर गोइंग टू डू मेथड ऑफ इमेजेस टुडे, एंड मेथड ऑफ इमेजेस इज नथिंग बट इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम। फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था पीछे के क्लासेस में। इफ आई कैन शो यू फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम, 2-3 लेक्चर पहले हम लोगों ने बनाया था फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम पे। देखिए ये फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम है। व्हाट डज फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम सेज? द सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन इन सम वॉल्यूम tau is uniquely defined Laplace or Poisson equation. The solution of Laplace or Poisson equation in some volume tau is uniquely defined if V is specified on the boundary. मतलब कोई भी रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में, एंड इफ यू कैन डिफाइन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, वंस यू डिफाइन पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, देन the solution of Laplace equation or Poisson equation inside that region is uniquely defined. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको ये बाउंड्री एक रीजन दिया हुआ है, so you can have a unique solution of the Laplace or Poisson equation satisfying the boundary condition. मतलब बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ Laplace इक्वेशन और Poisson इक्वेशन का हमेशा ही एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई पोटेंशियल फंक्शन मिल जाता है जो कि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि दैट पोटेंशियल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास ऑफ पॉइसन इक्वेशन, because there can be only unique potential function or unique solution of Laplace of Poisson equation which will satisfy the boundary condition. Boundary condition को satisfy करता हुआ there will only be a unique solution. वही बोल रहा है the solution to Laplace equation in some volume tau is uniquely defined if V is specified on the boundary. ठीक है, okay, means they cannot have, you cannot have two solution of Laplace of Poisson equation which satisfy the same boundary condition. You can have just unique solution of Laplace of Poisson equation. ठीक है, so if you have a solution, if you come across some solution of Laplace equation of Poisson equation which is satisfying the boundary condition, then you can rest assured that that is the only solution. There cannot be another solution of that Laplace and Poisson equation. अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाता है लैप्लास और पॉइसन इक्वेशन का जो कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इन दैट केस यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट दैट इज द ओनली सॉल्यूशन यू हैव, यू डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन। ठीक है, यू डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन यूनिकली डिटरमिन्ड इफ यू डिफाइन द बाउंड्री कंडीशन और यू डिफाइन द पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री। ओके, let's come to image method. What do you have in image method? Image method may be make it is basically application, a very powerful application of, it is a very powerful application of first uniqueness theorem जो अभी हम लोगों ने देखा, पीछे भी हम लोग क्लास इस पे लिए थे। ठीक है, तो it is the application of the first uniqueness theorem. That you first write the first uniqueness theorem. पहले भी पीछे का क्लास रिवाइज कर लीजिए। If you have a region in an electrostatic system, this is S and say this is tau. Tau is the region bounded by S, and inside you may have some charges, some discrete charges, some continuous distribution of charge, or the mix of the two, right?
So inside, of course, if it is electrostatic system, the Poisson equation is satisfied. So the uniqueness theorem says the solution of Laplace or Poisson equation is uniquely defined if V is specified on the boundary, मतलब कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है, और कैसे भी मिल जाए, मान लो जो इसका सॉल्यूशन हो और बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, जो V का वैल्यू स्पेसिफाई किया है बाउंड्री पे उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, इन दैट केस यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है. सो यू कैन हैव जस्ट यूनिक सॉल्यूशन of a Laplace or Poisson equation satisfying the boundary condition. Means satisfying the boundary condition, you cannot have more than one solution of the Laplace and Poisson equation. और डिटेल में अगर समझना है तो थोड़ा वो लेक्चर देख लीजिए जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम पे बनाया है, ठीक है. अब आते हैं मेथड ऑफ इमेजेस, हाउ वी मेक यूज ऑफ दिस यूनिकनेस थ्योरम and formulate a very interesting आइडिया ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस. मेथड ऑफ इमेजेस एक प्रोसीजर है जो कि कुछ फेमस प्रॉब्लम में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. एंड वी मेक यूज ऑफ यूनिकनेस थ्योरम ओवर देयर. दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिकनेस थ्योरम. देयर आर सम वेरी फेमस प्रॉब्लम, सेट ऑफ प्रॉब्लम. यू कैन नॉट अप्लाई मेथड ऑफ इमेजेस एवरीवेयर, राइट, but in some very famous kind of problem you can always apply method of images. So let's see the method of images. Let's take a problem and by that problem I can tell you what is the method of images. Method of images. Suppose I take a question, it's a very famous question. Suppose we have infinite conducting plane. Suppose we have infinite conducting plane, right? And this plane is grounded, and at a distance d from this plane we have a charge q. We have an infinite conducting plane, and at a distance d from this plane, from the center of this plane of course, we have a point charge q. This is the electrostatic system given to you, and I ask you to give me the potential at point P or the electric field at point P. You tell me what is the electric field distribution in this region. At any point P, I want you to find out the potential at point P. I can also ask you, give me the charge distribution on this infinite conducting plane. You may have some induced charges. Appearing on this plane because of the presence of charge q. So you tell me about the distribution of that induced charges. Magnitude you can predict that it will be minus q or so. But I ask you distribution, how the minus q or the induced charge is distributed on this plane. Or I can ask you a question that what is the force between charge q and the induced charge which you have on the plane. So I can have various set of question in this, ठीक है, कि आप बताइए कि induced charge जो appear हुआ है plane के ऊपर और जो charge q हो उसके पीछे कितना force apply हो रहा है, कितना, what is the force of interaction. Or I can also ask you, give me the electrostatic energy. So all these questions can be answered very easily by the method of images, ठीक है.
मेथड ऑफ इमेजेस यूज नहीं करेंगे then it is going to be a very difficult question, ठीक है. But once you use method of images, all these questions become very simple to answer. So what is that? What is method of images? देखिए, we construct a kind of electrostatic system with this plane as one boundary, and since it is infinite plane, I can consider a surface lying at infinite distance, say like this. So this plane is one boundary of this electrostatic system, and this S is another boundary of this electrostatic system. I can consider a closed region in electrostatic system, which is partly bounded by this infinite plane and partly bounded by this surface at infinite distance. So all this region can be enclosed in this. हम लोग एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, एक रीजन कंसिडर कर रहे हैं, which is bounded by this plane P and partly bounded by this surface at infinite distance, and I can define a boundary condition that अगर इसको boundary condition define करना है तो थोड़ा सा एक coordinate system choose कर लेते हैं इसमें, that would be easier. So this is x, y and z, x, y and z, right? Okay. Now this is the region tau, which is bounded by this plane and a surface at infinite distance, right? We have a region tau in space which is on the right side of yz plane. This region is x greater than 0, right? Greater than or equal to 0. This is the region in space on the positive side of yz plane. X greater or equal to 0, and this region is bounded by plane P and the surface S at infinite distance. Now we can specify the potential on the boundary of this region. How? See, the potential Vxyz is going to be 0 at x equal to 0, right? Means on this plane P, the potential is 0 since it is grounded. Right, potential is 0, and at infinite distance from this plane, potential is again 0 at r equal to infinity, or you can say at x square plus y square plus z square equals to infinity. The surface, on the surface S, on surface S. Of course, क्योंकि वो बहुत दूर है, ऐसे lying at infinite distance, so the potential will decrease as we go away from this infinite plane and the charge q. Infinite plane और charge q से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये potential fall करता जाएगा, and at infinity, at infinite distance from this plane or on S, the potential can be taken as 0. So we have defined a problem, a region in space which is bounded by P and S, and potential is 0 on the plane and potential is 0 on the surface also, since surface is lying at infinite distance from this point charge q and of course from this plane. So I can say that potential is 0 at infinite distance or on S.
So on the whole boundary, the potential is 0, right? We have defined a boundary, and at all the boundary, the potential is 0, right? And we have a Laplace equation inside this region, right? You have the Laplace equation in this region. Okay, we have a point charge. We have a point charge, so we can set up a Poisson equation, of course. Rho is not 0. So rho is a Dirac delta function over here. So we can set up a Poisson equation, and we are interested in finding this solution of Poisson equation. We are interested in finding out the solution of this Poisson equation. Poisson equation का हम लोग solution निकालने में interested हैं. Okay. So our problem is we have to find out the solution of this Poisson equation satisfying this boundary condition. We have to find out solution of the Poisson equation satisfying this boundary condition that v should be 0 on x equal to 0 and v should be 0 at r equal to infinity. The boundary condition is v is 0 on x equal to 0, which is infinite plane, infinite conducting plane, and v is 0 at infinity. V is 0 at infinity. This is your boundary condition. This is your boundary condition. So we have to find the solution of this Laplace equation. Solution of Laplace equation will give you the potential distribution, of course. Solution of Poisson equation. बार बार Laplace equation बोला. Poisson equation. We have to find the solution of this Poisson equation, right? And which satisfy the boundary condition. That is our aim. ठीक है. The boundary condition is v is 0 on the plane, that is x equal to 0, and v is 0 at r equal to infinity. This is r square basically. V is 0 at r equal to infinity. This is the boundary condition, right? Now, the uniqueness theorem gives us freedom that if I am able to find out the solution of this Poisson equation satisfying the boundary condition, then I can rest assured that that is the only solution, because you cannot have two solutions of the Poisson equation satisfying the boundary condition. Uniqueness theorem guarantees that you can have just a unique solution of this Poisson equation satisfying the boundary condition. Means somehow if I come across a solution of this Poisson equation which satisfies the boundary condition, then I can rest assured that there cannot be any other potential distribution, there cannot be any other solution. अगर कोई एक solution हम find out कर लिए, चाहे जिस मर्जी से find कर लें, चाहे हम जिस भी तरीके से निकाल लें, एक solution हम निकाल लेते हैं इस Poisson equation का जो इस boundary condition को obey करता है. In that case, irrespective of how I have got that solution, I can rest assured that that is the only solution, because you cannot have more than one solution of the Poisson equation satisfying the given boundary condition. ठीक है? So uniqueness theorem gives us that guarantee कि अगर हम किसी भी तरीके से कोई भी तरीका हम फॉलो कर लें and I find the solution of this Poisson equation, our solution is boundary condition को satisfy कर रहा है, then the uniqueness theorem guarantees कि that is the only solution you can have. You cannot have any other solution. तो solution का फाइंड करने का तरीका चाहे जो भी मर्जी जैसे भी करें हम, वो इसका solution होना चाहिए और boundary condition satisfy होना चाहिए, तो वही वो solution valid होगा, उसके अलावा और कोई solution नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग को uniqueness theorem जो है, it gives us a wide domain of innovation. I can innovate, right? I can innovate and find out a way of getting the solution of this Poisson equation satisfying the boundary condition, and uniqueness theorem is there to guarantee that that is the only solution you have, right? That is the only solution you have. So here we innovate. Here we innovate, making use of the freedom which is guaranteed by the uniqueness theorem. uniqueness theorem जो freedom हम लोग को दे रहा है कि चाहे जिस भी मर्जी से तुम solution निकाल लो, अगर वो solution boundary condition satisfy कर रहा है तो उसके अलावा और कोई दूसरा solution नहीं होगा. That's what uniqueness theorem guarantees. Okay.
So here we innovate, and what we do is, without disturbing this Poisson equation in this region, हम लोग को पहली बात तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉइजन इक्वेशन. तो हम लोग क्या करते हैं कि वी फॉर्मुलेट ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम. वी फॉर्मुलेट ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम which keeps this Poisson equation in this region unchanged, and the potential which is arising out in that problem satisfy the boundary condition. पहला बात कि हम लोग इस रीजन में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस रीजन में कोई भी चार्ज वगैरह पुट करोगे, एक ऐसा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे जो कि x ग्रेटर देन 0, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द वाइजर प्लेन में कोई चार्ज अलग से चार्ज नहीं है, क्योंकि अलग से कोई भी चार्ज यहां पुट करेंगे पॉइजन इक्वेशन बदल जाएगा. पॉइजन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So when you are formulating a problem, you must ensure that you should not put any charge, any other charge apart from Q in this region. इस रीजन में Q के अलावे और कोई चार्ज प्लेस नहीं करना है, क्योंकि चार्ज प्लेस कर देंगे उस केस में पॉइजन इक्वेशन बदल जाएगा. and even if you got a solution that is not the solution of the original पॉइजन इक्वेशन. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? व्हाट वी डू इज, instead of taking this plane, I have a charge q here, I place other charge minus q here. हमने क्या किया, we take a problem, we take altogether a different problem where we have charge q initially at distance d, उसको तो unchanged, उसमें तो कुछ नहीं करेंगे. मतलब on the right hand side of yz plane we are not doing anything, we are retaining this charge q so that the problem on the right hand side remains same, right? हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेन के बजाय I have placed other charge minus q at the same distance d behind this conducting plane. जो yz plane है उसके पीछे t distance पे at x equal to this is x equal to, this is d 0 0 and this is your minus d 0 0. So we are formulating a problem of a system of two charges, one charge charge q at a distance d from this yz plane on the right hand side, and we have a charge minus q behind this yz plane at the same distance t, right? So in this problem, if I take this problem, then our Poisson equation on the right side of yz plane is going to remain same as the previous problem, because right hand side में हमने कुछ भी alteration नहीं किया है, right hand side में हमने कुछ भी alteration नहीं किया है. So the problem on the ये तो differential equation है, differential equation is always defined at a point. मतलब देखो, जैसे आप डेरिवेटिव डिफाइन किया, लैप्लासियन डिफाइन किया, लैप्लासियन क्या है, लैप्लासियन एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. सो डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड एट अ पॉइंट. तो अगर इस रीजन में किसी पॉइंट पे आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, चार्ज क्यू पहले से था, ठीक है, अभी भी चार्ज क्यू है, कोई चार्ज यहां प्लेस नहीं किया है, इन दैट केस दिस equation remains unchanged on the right hand side of the yz plane, and whatever I do on the left hand side, that is not going to affect this. लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चार्ज पुट कर दे, ये अफेक्ट नहीं होगा. मतलब राइट हैंड साइड में हम कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट मेकिंग एनी अल्टरेशन द राइट हैंड साइड ऑफ yz प्लेन, ठीक है. और लेफ्ट हैंड साइड से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन जो निकालना है वो राइट हैंड साइड ऑफ द yz प्लेन में निकालना है, ठीक है. We are interested in finding the solution of this Laplace equation, Poisson equation, satisfying the boundary condition, earlier problem. Now what we are doing is, हम लोग अब यूनिकनेस थ्योरम हमें फ्री छोड़ दिया है, चाहे जिस मर्जी से तुम इसका सोल्यूशन निकाल लो, और वो सोल्यूशन अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, so that is going to be the only solution. So what I am doing is, I am innovating and I am formulating a very new problem. A new electrostatic. I imagine a new electrostatic system. That electrostatic system consists of the 2 point charges. One point charge same as what you had earlier, and another point charge on the back side of yz plane at same distance t, right? So if I set up Poisson equation, the Poisson equation on the right hand side of yz plane remains unchanged, because the charge distribution which you have on the right side of yz plane is same as what you had earlier.
There is no alteration. There is no alteration. So the Poisson equation of this new problem on the right hand side of YZ plane is same as the Poisson equation which we had earlier, right? Point charge near a conducting plane. So this is remaining same. And what about boundary condition? If I have a Qn minus Q, then at r equal to infinity, the potential is going to be 0, because due to a point charge, the potential varies as inverse function of r. Potential depends inversely on r. 1 by r पर depend करता है ना, point charge की वजह से जो potential है. So potential at infinity due to this charge is 0. Potential at infinity due to this charge minus Q is 0. So this boundary condition is satisfied. What about this boundary condition? If I take any point P on this plane, since this plane is in the middle of minus Q and plus Q, so the distance of this point P from this minus Q and distance of this point P from plus Q is going to be same. Distance of this point P, any point P on this plane is equidistant from minus Q and plus Q. That point P can be anywhere on this plane. इस plane पे कोई भी point P लेंगे तो उसका distance minus Q से या plus Q से same है, right? The distance is same. So if I take potential at point P, the potential to minus Q is going to be minus Q upon 4 pi epsilon naught r, and potential to plus Q is Q upon 4 pi epsilon naught r. So this is going to be 0. What you are finding? What you are seeing? The potential distribution which we had in the new problem minus Q and plus Q is satisfying all the boundary condition. जो minus Q plus Q से जो potential distribution निकल के आ रहा है वो potential जो है previous problem का boundary condition satisfy कर रहा है. जो new problem जो हम लोग formulate किए हैं Q तो पहले से था, minus Q एक और डाल दिया, तो ये जो नया system है Qn minus Q, इसकी वजह से जो potential distribution निकल के आ रहा है वो पोटेंशियल जो है बाउंड्री कंडीशन प्रीवियस प्रॉब्लम का सेटिस्फाई कर रहा है, और जो नया प्रॉब्लम है और जो पुराना प्रॉब्लम था उसमें जो लैपलेस पॉइसन इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन था वो सेम है, बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू प्रॉब्लम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम क्या था, पॉइंट चार्ज नियर कंडक्टिंग प्लेन. जो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो राइट हैंड साइड में है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ओरिजिनल प्रॉब्लम और जो नया प्रॉब्लम है उसका सेम है राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन में. एंड दिस ऑफ कोर्स पॉइसन इक्वेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑल्टर किया नहीं है. आई हैव मेंटेन्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन टू बी सेम एज द प्रीवियस प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम ऑल्सो रिमेन सेम. सो व्हाट आई हैव डन, I've got a potential distribution जो कि माइनस Q प्लस Q की वजह से जो potential distribution निकल के आ रहा है वो previous जो original problem है उसका boundary condition satisfy कर रहा है और Laplace equation को भी satisfy, because Poisson equation has not changed. That means the potential distribution which is coming out of this minus Q and plus Q on the right hand side of YZ plane is the only solution of this Poisson equation. So instead of finding out potential to conducting plane and charge Q, you just find the potential to minus Q and plus Q at any point P, and you can rest assured that is correct, because uniqueness guarantees that. Because the problem, the Poisson equation of the system having charge minus Q and plus Q and Poisson equation of the system where you are conducting a plane and point charge Q on the right hand side of YZ plane is going to be same. ठीक है, पहले का जो सवाल था जो उसमें कंडक्टिंग प्लेन था, पॉइंट चार्ज Q था, उस समय जो हम लोग पॉइसन इक्वेशन सेटअप किए थे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन एंड अ प्रॉब्लम वेयर यू हैव माइनस Q एंड प्लस Q, राइट. चूंकि राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन जो है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले वाला प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का सेम है, सो पॉइसन इक्वेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम, राइट. सो एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट कि जो अभी का सवाल है माइनस Q प्लस Q वाला का, उसके वजह से जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ऑफ कोर्स पॉइसन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही. अब पॉइसन इक्वेशन नया वाला प्रॉब्लम का प्रीवियस प्रॉब्लम का सेम है. इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाइजर प्लेन
वही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग प्लेन ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से भी होगा. You can't have two solution. You can't have two solutions. You have ensured that Poisson equation remains same, right? Other new problem on the right side of YZ plane, and you are just seeing that potential distribution जो निकल के आ रहा है वो boundary condition से satisfy कर रहा है. So that is the only solution of this Poisson equation. Satisfying the boundary condition, you got a solution of Poisson equation. So that is a unique solution. That is a unique solution. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम क्या है? Conducting plane and point charge. We are replacing that problem. We are replacing the conducting plane with a charge minus q, and I call this charge image charge. And the position of image charge is such that the boundary condition is satisfied. We call this image charge, and this whole method is called method of images. ये जो पूरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इमेजेस. ठीक है. So what we do is we replace the conducting plane with a charge minus q lying at a distance d on the back side of the plane, and we just find the potential distribution due to minus q and plus q in this region, and I rest assured that that is the potential distribution due to conducting plane and point charge also. Once you find the potential distribution, then by taking gradient you can find out the electric field also. Once you find the electric field, you can do many things. You can find out the charge distribution on this plane, and you want the force between plane and the point charge q, just find the force between q and minus q. So we will do all these things in next video. अगला वीडियो में ना ये सारा काम करते हैं हम लोग. ठीक है. Let's do all these things in next video. So you understand what is the method of images, what is the basic concept behind method of images, and how method of images is the direct application of the first uniqueness theorem. That is very important to understand. कि method of images कैसे it's a nice and a very powerful application of first uniqueness theorem. That is very important. ठीक है. So I think I should stop over here, and we'll in next lecture we'll be doing we will be getting the potential distribution, the field distribution, and the charge distribution on this plane, induced charge distribution, the force between plane and the point charge, and electrostatic energy. All this stuff we will be doing in the next lecture. Okay. So thank you very much and have a good day.